हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑटो राउंडर्स। आज का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि एक फॉर्च्यूनर को लेजेंडर में कन्वर्ट करें एंड फाइनली द कार इज़ हियर। सो दिस कार वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू अ न्यू शेप लेजेंडर। तो इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो फ्रंट के जितने भी पार्ट है, शो ग्रिल, बम्पर, हेडलाइट, ये सारे भी पार्ट्स जो है वो सब चेंज होने वाले हैं। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द कार एंड द कस्टमर हैड कम टुडे, सो उन्होंने हमें काफ़ी सारे पैनल्स दिखाए कि जिसमें छोटे छोटे डेंट्स है, डैमेजेस है, काफ़ी डीप लेवल स्क्रैचेस है। तो जब स्क्रैचेस सरफेस लेवल होता है, जब वो क्लियर पे होता है तो आप उसको फिर भी पॉलिशिंग से निकाल सकते हैं, बट व्हेन इट रीचेस टू द पेंट लेवल देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। So he wants to keep this car for at least minimum next 5 to 7 years. So that's where he decided कि फुल कार को पेंट कर देते हैं। तो अब हम इसको लेजेंडर किट के साथ साथ कंप्लीट कार को पेंट भी करने वाले हैं। इसकी जो टेल लाइट है उसको भी चेंज करने वाले हैं और अलॉय व्हील्स जो है उसको भी हम कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक में करेंगे। सो दिस कार विल बी अ ब्लैक एडिशन टोयोटा फॉर्च्यूनर न्यू शेप लेजेंडर। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, स्टे ट्यून गाइस। तो फाइनली अभी इस गाड़ी का काम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे गाड़ी देखने जाए तो ज़्यादा काम नहीं है, मगर छोटे छोटे डेंट्स बहुत सारा है गाड़ी में। यहाँ पे बोनेट में देखेंगे ज़्यादा विजिबल नहीं है प्रॉपर, और मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे है, यहाँ पे एक है डेंट। फेंडर में स्क्रैचेस है, डीप स्क्रैचेस है। यहाँ फ्रंट लेफ्ट डोर में एक है, यहाँ पे डेंट्स है। तो पूरा गाड़ी चेक करके जहाँ जहाँ पे डेंट्स है, स्क्रैच है, वहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अभी इसका काम हम स्टार्ट करेंगे।
Wonderful.
हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑटो राउंडर्स। और आज का जो वीडियो है वो ये टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के ऊपर है। सो गाइस, आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट कि ये लेजेंडर है या टाइप 3 मॉडल है, बट एक्चुअली दिस इज़ अ टाइप 3 फॉर्च्यूनर विच हैज़ बीन कन्वर्टेड बाय ऑटो राउंडर्स इन मुंबई इन लेजेंडर, and along with that we have painted the full car. Now when you see this car, the paint is really good because this is the BMW Black Sapphire, so it comes with a different sparkle. अगर आप इसको धूप में देखेंगे या थोड़ा लाइट के साथ देखेंगे तो you can see lot of sparkle in this. So there is blue, there is white, so it looks amazing because it's a premium shade of BMW and the car looks amazing. I also want to give you one feedback about these headlights कि these are aftermarket headlights, but इसका जो output है वो काफ़ी अच्छा है. It's a decent output. And the things that we have changed is the entire front bumper, the grille, the fog lamps, the headlights. All these things in the front has been changed. Along with that, even the rear bumper and the tail lights we have changed. And now the car is almost like कि एक showroom से ही एक Legender की delivery हो रही है. Same उसी तरीके से यहाँ से जाएगी. And it's looking amazing. And one more thing which I want to tell you, काफ़ी सारे हमारे पास इंक्वायरी जब आते थे तो लोग बोलते थे कि सर लेजेंडर किट की फिटिंग में इशू तो नहीं आता है, बट अगर आपके जो बंदे हैं, जो आपकी जो टीम है, इफ़ दे आर प्रोफेशनल एंड इफ़ दे डू इट नाइसली, प्लस यू शुड ऑल्सो हैव एन आई फॉर ऑब्जर्वेशन कि फ़िटिंग में कहीं इशू ना आए. तो इस कार में तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी फिटिंग का कोई चैलेंज नहीं है. इवन लेट मी शो यू फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, देर इज़ नो चैलेंज फ्रॉम फिटिंग. इट्स लुकिंग परफेक्ट. सो one more thing I missed is the alloy wheels. So we have painted the alloys in black, so the car looks more sporty. And काफ़ी टाइम के बाद हमने लेजेंडर किट किया हुआ है, so it's looking amazing. And इंटीरियर में हमने कोई चेंजेस नहीं किया, बट इसका सेकेंड जो प्रोजेक्ट होगा वो इंटीरियर करने वाले हैं. So we have a customer also, Mr. Yash, along with us. So I'll take his feedback कि उनको कार कैसी लगी. So Yash, can you please come? So we have Yash also with us, and the car has come from Kalyan to this Andheri Marol, and we'll take his feedback overall how the car has come out. So Yash, please. Hello everyone. The team of Autorounders have done an incredible job and I'm really happy and satisfied with their work. To all of you who are planning on modifying their car in any way, I would highly recommend you all to visit their workshop before you go anywhere else. Because, well, just look at my car. Thank you so much for giving us an opportunity. Thank you, and we look forward to work on your other car as well.